स्वागत है आपका एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम पर ब्रॉट यू बाय डैफा न्यूज। तो दोस्तों कल रांची मैच के बाद जो इंडिया जीती थी एज यू नो टू टेक द सीरीज ओवर इंग्लैंड, कप्तान रोहित शर्मा साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उन्होंने बहुत बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, but there was something that he said towards the end of that press conference, and it had to do with the question which बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं in regards to where certain players are, whether there is a shift now for players putting the IPL as a priority and not necessarily Test cricket. आपने देखा होगा, सुना होगा कि ईशान किशन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है और श्रेयस अय्यर के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। Ishan Kishan, he in the month of December now, more than 3 odd months ago, he told the BCCI कि मुझे break चाहिए, and he was granted that break. लेकिन उस break के दौरान जो मेरे ख्याल से 8, if I'm not mistaken, रणजी ट्रॉफी मैचेस हुए झारखंड के, वो एक मैच भी नहीं खेले उसमें, and there's been a lot of to and fro, some flip flopping on the part of Rahul Dravid, the head coach. Ishan Kishan has not said anything. I've heard certain reports where he is chosen to stay quiet because he feels somewhat hard done by the way that he was treated. At least he feels that, playing in series but then being benched a lot. Jo bhi karan hai. And then Shreyas Iyer, who we know on account of bad form, was dropped from the Test team not recently, and then did not turn out for Mumbai in their most recent match in the Ranji Trophy. Apparently, he has said that he has a back spasm, but Nitin Patel, the former Indian team physio, who's also at the NCA now as the head of the medical staff, he apparently has denied this. तो बहुत सारी चर्चा हो रही है। आज एक रिपोर्ट भी आई इंडियन एक्सप्रेस में मेरे मित्र देवेंद्र पांडे से कि the BCCI is now going to start higher incentives, 15 lakhs per test match, 6 lakhs per ODI, and so on, to put a bit more focus on the outside, on surface level, on players valuing test cricket. और ये सब दोस्तों अगर हम थोड़ा रिवाइंड करेंगे तो जय शाह, he said at the start of the Rajkot test that now players who do not prioritize red ball cricket and domestic cricket will find it very very hard to get back into the Indian team. और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी यही कहा था. He said we will pick players who value test cricket, who are hungry for test cricket. यदि आप सिर्फ आईपीएल खेल के इंडियन टेस्ट टीम में आना चाहोगे तो ऐसा कुछ गलतफहमी मत पालिए। आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, आपको रणजी खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। दिस इज द ब्रीफ इन शॉर्ट बैक स्टोरी ऑफ व्हाट हैज लेड टू yesterday's statement from रोहित शर्मा। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो किसके किसके इशारे में उन्होंने वो बात कही। It's also, दोस्तों, a comment which question rather that was asked of him based on the success of the likes of Sarfaraz Khan, जिन्होंने थर्ड टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया और दोनों पारी में 60 लगाए। ध्रुव जुरेल, जिन्होंने अपनी पहली पारी में 46 बनाए और फिर इसी रांची जीत में पहली पारी में 90 बनाए, and then he finished off a somewhat tricky chase with 37, 38, 39 not out, जो भी था, in the company of Shubman Gill, who got 52 not out. So Akashdeep, another proven domestic player, उन्होंने 3 विकेट लिए अपने डेब्यू पे, डे 1 ऑफ द रांची टेस्ट। तो इन यंगस्टर्स, इन डोमेस्टिक सक्सेस स्टोरीज, अगर हम खास सरफराज और आकाशदीप के बारे में बात करें, इनकी सफलता के बेसिस पर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड कि where is the focus of certain players on domestic cricket, on Ranji cricket. We also heard some rumors, some reports कि मुंबई इंडियंस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है जब से हार्दिक पांड्या वापस आए हैं, and हार्दिक पांड्या is of course training with Ishan Kishan at a camp in Gujarat in preparation for the IPL. हालांकि दोनों ने मेरे ख्याल से आज के दिन, was it yesterday or today, they started their official comeback by playing in the DY Patil T20 sports tournament. Maybe things are not what it seems when it comes to Rohit Sharma inside Mumbai Indians. Hardik Pandya comes back. Hardik Pandya is named captain. Hardik Pandya has a certain proximity, it appears, to Ishan Kishan. Maybe, शायद मैं ज्यादा यहाँ पे सोच रहा हूँ, putting 2 and 2 together and getting 6 or 7. Maybe Rohit's statement came from that. I don't know. This is all just speculation. But the fact is कि रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान ने एक
बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट दिया कल। मैं खुश था ये स्टेटमेंट सुनकर। एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट दीज स्टेटमेंट्स कि आपको डोमेस्टिक खेल के तभी आप इंडियन टीम में आएंगे। ये स्टेटमेंट खुद रोहित शर्मा पे कभी लागू नहीं होगा, ये कभी विराट कोहली पे लागू नहीं होगा, ये कभी जसप्रीत बुमराह पे नहीं लागू होगा। तो अगेन वी शुड टेक these statements by Rohit Sharma as well as Jay Shah with a pinch of salt, because I mean someone like KL Rahul 3 टेस्ट मैच मिस कर चुके हैं, अभी तक पूरा उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, छाप नहीं मिला है कि वो फिट है। Should he go back and play domestic cricket? There's an argument, but I think probably someone like a KL Rahul is probably also exempt from these statements. So while we can surmise in which direction Rohit Sharma was speaking yesterday, I just wish that these rules applied to everyone and there was no exemption for someone like Rohit himself if it ever happens, or Virat Kohli, or KL Rahul. It seems a statement directed more toward fringe players, toward youngsters, someone like Ishan Kishan and Shreyas Iyer from where it seems. But it was, in a positive way, it was refreshing to see Rohit Sharma come out and make such a statement. एक टेस्ट मैच बाकी है, स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, as we know. Maybe what Rohit has said now and what Jay Shah said, what 10 odd days ago, 12 days ago in Ranchi, maybe we'll see this come into effect the next time India returns to Test cricket, which I believe is in the month of September, if I'm not mistaken, जब बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैच खेलने आएगी और उसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड की टीम 2 टेस्ट मैच खेलने आएगी. Who knows? But a rather refreshing, very very direct remark from Rohit Sharma yesterday in Ranchi in regards to players on the surface level seemingly putting the IPL ahead of Ranchi Trophy cricket. देखते हैं आप लोग को क्या लगता है. Let's go to the live stream. Let's see कौन जुड़ा है. Hello Subodh, कैसे हो? Good afternoon. Cricket saying if Rohit can improve a little bit in captaincy and Test cricket, he can leave good legacy. Yes, he needs to improve a bit. Do they care about central contract? IPL money enough for them. So disappointed with Iyer and Ishan. Yep. Why KL Rahul's temperament not questioned across format? बहुत लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं अखबारों पे, वेबसाइट्स पे, खासकर यूट्यूब चैनल्स पे. तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत लोग उनके पीछे पड़े हैं. बस आपको उनके आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और उनके यूट्यूब चैनल देखने पड़ेंगे. जेम्स सर, अगर हैरी ब्रूक खेलते तो क्या सीरीज इंटरेस्टिंग होती? ये सीरीज क्या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगी? ये बहुत बहुत साल के बाद, ये 2017 के बाद जब ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज लगी. तो कहां से पूछ रहे हो कि ये सीरीज आपको, ये सीरीज बोरिंग लगी? क्या बात है यार, मुझे तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये सीरीज. आई सपोर्ट द स्टैंड ऑफ टीम मैनेजमेंट. सो डू आई मनीष. रोहित शर्मा को खुद ओवरसीज टेस्ट खेलने चाहिए, सेना कंट्री में टूर्स पे नहीं जाते वो. नहीं, एक्चुअली उन्होंने वेस्ट इंडीज गए थे, इंग्लैंड जा चुके हैं. ऐसा कोई सेना कंट्री नहीं है जहां वो नहीं गए हैं भाई. वो तो सारे सारे टूर्स खेल चुके हैं. उन्होंने कौन सा सीरीज स्किप किया? पता नहीं. सुबोध, आज कहां से लेके आ रहे हो ऐसे फालतू स्टेटमेंट्स? जेमी सर, पिक वन. रोहित शर्मा 6 और कोहली 6. कोहली छक्का मारता है? मुझे याद तो नहीं है. I'll go with रोहित शर्मा. KL Rahul is not in same league as Rohit and Virat. So why he walk in the team? Bilkul, he's not, but we know the faith that this team has. If you watched cricket for the last 3 years, you know the kind of status KL Rahul enjoys in this team. जेम्स सर, कभी आइएगा हैदराबाद, हम आपको बिरयानी खिलाएंगे. जरूर जरूर आएंगे सुबोध, जरूर. DTSY Australia wins more ICC trophy. हाँ कमल, बहुत बहुत इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. अब आती IPL वर्सेस कंट्री डिबेट. बट मोर देन दैट, लाइक हम इतने सारे शोज पे डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्टिंग कल्चर के अंदर एक डीएनए है. उनके डीएनए में एक जज्बा है, एक प्रोफेशनलिज्म है स्पोर्ट्स के लिए, जो हमारा देश लैक करती है भाई. If Jurel performs in IPL, he should be second keeper after Jitesh. No KL, no Ishan T20. I agree. Gus Atkinson will play Dharamshala Test. I don't know. You'll have to ask the England guys. Central contract. Central contract isn't all about money, which players want, but it carries influence and draws brands as well. That's true. Rohit is talking about players like Ishan Kishan, Hardik, Deepak Chahar, Yuzi, and Karthik Tyagi. Karthik Tyagi का मुझे नहीं पता. I don't know what is up to these days. Chahar, definitely. I would put Chahar in that group. I would put Rahul Chahar as well in that group. Chahal hardly plays. It's been years since he's been a regular in fact, I think it's been years since he's played a red ball match for Haryana. So I would ignore the Chahal
bit because he's never going to play Test cricket. सर 22 में साउथ अफ्रीका टेस्ट रोहित नहीं खेले थे, 21 में पहले, हाँ क्योंकि वो इंजर्ड थे भाई, उन्होंने अपनी मर्जी से स्किप नहीं किया, और और बड़े प्लेयर्स की तरह वो इंजर्ड थे. Neil Wagner retired. Yeah, man, what a great bowler he is, not was, is. ये बीसी अचानक कैसे जागा? This problem is exactly now someone is asked the pertinent question. अभी 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 ये कैसे जागे हैं? अभी ये सवाल क्यों उठा है? Because my gut feeling is कप्तान साहब को थोड़ा लगा है भाई कि जो मुंबई इंडियंस के साथ उनको हुआ है. Also Rahul Dravid has looked, he's spoken very tersely. देखो something went down in South Africa. I've heard things, I don't know for sure, तो मैं यहाँ कुछ कहूंगा नहीं. Something went down in South Africa which has ticked off the management regarding Ishan Kishan. I don't know what it is, but it's something between Shreyas Iyer carrying a lot of swag, not backing up the test returns. That's probably a very, very small factor. It's something has to do with all this Mumbai Indians lobby. And I think also the fact that Ishan Kishan have been asking for a break, expected to walk back into the Indian team. ये कितनी बार मैं कह चुका हूं कि इतना इतना सिंपल एक तरीका होता है आपको इंडियन टीम में आने के लिए. आपको मैच खेलने पड़ेंगे. ईशान किशन ने दिसंबर के महीने में साउथ अफ्रीका टूर से वापसी करी. वापस आके उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला. ट्रेनिंग जबरदस्त की है, कर रहे हैं, बहुत नॉकिंग करी, बहुत फिटनेस रेजीम की है, बहुत मेहनत करी उन्होंने. लेकिन ये मेहनत जो ईशान किशन कब से कर रहे हैं, ये केवल एक नेट्स तक सीमित है. झारखंड के पास 8 रणजी ट्रॉफी मैचेस थे. अगर, ये मेरा मानना है, यदि ईशान किशन को टेस्ट क्रिकेट खेलना था, यदि वो टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंट मानते थे, तो उनको उन 8 झारखंड मैचेस में से सिर्फ एक खेलना था. ये दिखाने के लिए रोहित को, राहुल को, सेलेक्टर्स को कि हाँ भाई मैं सीरियस हूं. 25 साल का लड़का है, 26 साल का लड़का है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है उनका. लेकिन when you take a break and then you're seen doing other things instead of turning up for your state team, और ऐसा नहीं है कि वो ये पहले से करते आए. बांग्लादेश टूर के बाद डबल सेंचुरी मारने के बाद बांग्लादेश में he went back to झारखंड. He got 100 for झारखंड. तो मैं थोड़ा हैरान हूं, डिसअपॉइंटेड हूं कि ईशान किशन ने उन 8 रणजी ट्रॉफी मैचेस के बीच एक भी खेला नहीं. एक खेलते तो एटलीस्ट मैसेज जाता द्रविड़ को, रोहित को, सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं. लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं. 2-2.5 महीने में उसके बीच आप सिर्फ हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, आप फिटनेस दिखा रहे हो. उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ईशान किशन इस सीजन मुंबई इंडियंस के लिए ताबड़तोड़ सीजन करें, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप में एटलीस्ट अपना नाम तो डालें. लेकिन आई थिंक it's left a sour taste in many people's mouths, which is why you're seeing all these reports going on right now. JB sir, I love your analysis. Thank you so much. How is Meham and son? They're all very fine. Thank you for asking, Subodh. Thank you. Hardik has a master plan for accurately moving in time so that no one questions him. कड़वी बात कही आपने निखिल आज, लेकिन कुछ सच्चाई है आपकी बातों में. There's a difference between being a Kohli, Ashwin, Bumrah and being a Ishan. बिल्कुल. They're not even in the same league. If BCCI is so serious about domestic cricket, why not cancel IPL? Well, I mean, Amandeep, आप भी शायद कुछ अलग ही रियलिटी में जी रहे हो, because BCCI needs the IPL. But सबसे बड़ी बात, more than the BCCI needing the IPL, the BCCI actually has no say over the franchises. ये हम देख चुके हैं बुमराह और रोहित के केस में. अगर फ्रेंचाइज चाहती है कि प्लेयर आईपीएल प्लेऑफ्स खेले, तो वो प्लेयर कभी कभी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट टूर के लिए लेट रवाना होते हैं. सो व्हाइल द आईपीएल इज इंडीड अ बीसीसीआई प्रॉपर्टी, the BCCI cannot say a thing to the franchises. The franchises run the show. The franchises control the players. So the BCCI, even if they wanted to cancel the IPL, they cannot, because the 10 franchises are the ones who call the shots. And again, we've seen what? We've seen 4 World Cups happen since the IPL started. तो अगर तब तक नहीं हुआ, अब नहीं होगा. सुनने में आया कि अय्यर ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला जाएगा, तो पांडे को क्यों नहीं निकालते? सवाल अच्छा है, सवाल बिल्कुल जायज है. सुबोध सुरेंद्र कुमार, आप कैसे हैं भैया जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो? आपका परिवार में सब कुशल मंगल? बिल्कुल है, आशा करते हैं आपके साथ ही वैसा है.
जिमी सर क्या ईशान किशन का करियर खत्म? नहीं नहीं नहीं, करियर खत्म नहीं। टेस्ट में तो अभी मेरे ख्याल से ये नहीं आएंगे, लेकिन T20 और वनडे में ये जरूर रहेंगे हिस्सा। Is franchise owner more powerful? Yes, yes, I just said that exactly. Players can refuse to play test in first class. Can BCR the IPL governing council? No. Should minimum first class career be compulsory for being on the auction roster? Players like Robin means I agree. It should. It definitely should. How will BCI distinguish who plays? Exactly what I said. This rule will never apply to Rohit, Bumrah, Ashwin, Kohli because they're senior and they have superstar status. और हमारे देश में सुपरस्टार जो भी है उनको हम एक अलग लेवल पे रखते हैं. So it won't happen. It's going to happen to probably everyone apart from five players, which is wrong, but it's just how it is. Didn't Ishan took a mental break? Yes, he did. Why is he expected to be back playing domestic if he doesn't feel good mentally? Again, because Harpreet, as per the reports, he told the management, और ये मैंने सुना है, uh, team sources say he wanted to get his cricket back in order. And then apparently when he was not picked for the T20Is and the tests, he got ticked off. If this is true, you need to prove that you're still in form, right? You've taken the mental break, that's fine, but you cannot seriously expect to come back in the team without showing recent match form. Like I said, it's been 3 months since he took a break. If he wanted to come back and play Test cricket, all he had to do was go play one 4-day Ranchi match out of 8. There were 8 Jharkhand matches in the Ranchi Trophy for Ishan Kishan. All he had to do was go to one, score some runs, show interest, and he would have come back. You cannot pick a player who's taken a break to sort out his cricket, and when he's not taking the efforts to sort it out. By sorting it out, it means you go, you take a break, you detox, you go back to the nets, and then you play a match. ऐसा कोई प्लेयर नहीं है क्रिकेट के इतिहास में जो बिना मैच खेल के सेलेक्ट नहीं होगा. And if he's not feeling good mentally, I don't think he would have been seen doing certain things. I think he's just fine, and I believe maybe I'm proven wrong. Like often on these live streams, I think Ishan Kishan himself has turned his back on red ball cricket. Hardik Pandya पर Jay Shah का हाथ है गुजरात connection. That's why he's so relaxed. Who knows, man? Does the form in IPL can harm potential World Cup player selection? Not this time around. It has in the past, Nikhil, but not this time. I don't think so. Dravid is also at small fault. Ishan frankly did well on West Indies tour. He did, but suddenly they tried to pigeonhole KL and SA. I don't know why. It's very obvious. I've said this on many live streams. जब तक राहुल द्रविड़ कोच हैं, केएल राहुल हमेशा टीम में आएंगे. We've seen the red carpet status that was afforded to KL Rahul when he came back from a long injury, and I was very critical of the fact that India made the mistake of keeping wickets with KL Rahul. But like I said, that is the status that KL Rahul holds in Indian teams where Rohit Sharma is the captain and where Rahul Dravid is the coach. And that's something which we're just going to have to live with. A lot of people come on these live streams and they ask these good questions, and I understand the frustration when it comes to KL Rahul because he's a he's a squandered talent, but unfortunately he will always be in that category where he won't need to prove himself in domestic cricket. Rohit likes Ishan. I've heard that, but I've heard things have changed post Hardik Pandya's return and him taking over as captain and Hardik and Rohit being shunted. So I think there's some bitterness on the part of Rohit Sharma now. Otherwise, he wouldn't have made that statement, which is looking directly at Ishan Kishan. So your thoughts on comparison between Gill and Rachin Ravindra? किसने compare किया इन दोनों को? मैंने तो कभी compare नहीं किया. If somebody can tell me who has compared these two, Subodh, I will try and give you the answer based on जिस व्यक्ति ने ये comparison कहा. It's a league. Have you seen the English Premier League not happening for the FIFA World Cup? You guys can go about that yourselves. Hardik, frankly, shouldn't be an IPL T20 squad if he doesn't bowl. I agree. Should keep an eye on other all-rounders like Hangar, Gerkar, Thakur, Parag Mankar, or Harshal. I think the Harshal ship has passed. I think the Shardul ship is about to crash. Hangar Gerkar, if he stays successful, yes. Parag Mankar has been successful for a long time. Maybe that's a good name, yeah. Jamie sir, why is Rajat Patidar fast tracked? He wasn't fast tracked. He's been scoring runs for a long time. ये 9 साल तक काफी अच्छे आंकड़े पेश कर चुके हैं.
ही स्कोर्ड 100। सी, जब आप रणजी ट्रॉफी फाइनल में रन्स बनाते हो और आपकी टीम जीत जाती है, तो उसके बाद बहुत सारे प्लेयर जो है वो इंडिया ए में आते हैं। रजत पाटीदार ने बहुत सारे रन्स बनाए, क्वालिटी रन्स बनाए, आईपीएल में 100 बनाया, मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी फाइनल जिताकर एक 100 लगाकर, और उन्होंने बहुत रन्स मारे उस सीजन। Then he went in the India A. India A is the last step before you play Test cricket. He got hundreds for India A, and then he was selected. He's just a typical case of like Sarfaraz. काफी सीजन से सफल रह चुके हैं। मिडिल ऑर्डर में एक जगह, बल्कि दो जगह खाली थी जब केएल राहुल और विराट कोहली नहीं थे, तो नंबर 4 और नंबर 5 के डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर, इंडिया ए परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर दो प्लेयर्स को चुना गया। नंबर 4 पे रजत पाटीदार, नंबर 5 पे सरफराज। अफसोस की बात है कि रजत पाटीदार अब उस कैटेगरी में आएंगे। इनसे पहले इनसे भी अच्छे प्लेयर देखे मैंने पिछले 28 साल में, जो डोमेस्टिक में बहुत बहुत हासिल करके अनफॉर्चुनेटली टेस्ट लेवल में नहीं चल पाए। एंड चलिए, उनका टेस्ट करियर छोटा रहा, काफी निराश खुद होंगे पाटीदार, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो फास्ट ट्रैक हुए। वो बंदा 9 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है, अच्छी एवरेज, अच्छी औसत, गुड रन्स, tight runs, crunch runs, match winning runs in domestic, in zonal, as well as for India A. So he earned his right to be here, but unfortunately, he was just not good enough to play Test cricket. It's as simple as that. ईशान T20 से ड्रॉप है। हाँ, टेस्ट खेलना नहीं चाहता। ओडीआई में केएल राहुल कीपर है, सही बात है। क्यों अपने इंटरनेशनल करियर पर लात मार रहा है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा लगा केएल राहुल पे कुछ और लोग मेरी तरह सवाल उठाते हैं। बहुत बहुत लोग भाई, मेरे आप कभी व्हाट्सएप ग्रुप में आना, क्या क्या कहते हैं लोग, मतलब मैं मेरे मीडिया सर्कल्स में बहुत लोग कई साल से काफी फ्रस्ट्रेटेड और निराश हैं केएल राहुल से। अकेले नहीं हो सुबोध। स्पोर्ट्स फैन, आई थिंक इन इंग्लैंड प्लेयर्स, भाई आई एम पुटिंग ऑन दैट टाइमर। ये सुबोध ने 50 सवाल पूछे। सुबोध, और लोग भी है भाई, डोंट स्पैम दिस चैट प्लीज। अच्छा लगा केएल राहुल, अच्छा हो गया। आई थिंक इन इंग्लैंड प्लेयर्स हैव बीन गिवन फ्रीडम, बट दे आर नॉट बाउंड टू प्ले फर्स्ट क्लास। दे आर नॉट डिफेम्ड, दे आर नॉट बाउंड टू, नो, एंड दे आर नॉट डिफेम्ड, नो। भाई सुबोध, हो गया केएल राहुल पर यार। केएल राहुल ने कुछ बिगाड़ा तुम्हारे खानदान का? आगे बढ़ो उससे यार, और भी अच्छे प्लेयर है केएल राहुल से। बुमराह is 29, Rohit is 36, so who's India's next test captain? This question has been asked numerous times, and unfortunately, because of the management and the selectors, there's no one being groomed. Shubman has time, Rishabh has time. I thought Iyer had time, but unfortunately, he's batted himself out of the test team. Uh, if you want an answer based on what I've heard, Rishabh Pant. Will Bumrah play fifth test? Well, there's no reason he shouldn't, right? He was only supposed to miss the fourth test. So as for BCCI, he's coming straight back. Things should not go very far now. There should be more mutual communication rather than issuing statements in media. सही बात है। मेरा ये सवाल था, who you think will be better batter in future, Rachin or Ahmedabad Gill? तीनों फॉर्मेट्स में रचिन रविंद्रा, टेस्ट और वनडे में शुभमन गिल। अश्विन के बाद हमें सुंदर को ग्रूम करना चाहिए, वही अश्विन रिप्लेसमेंट। सुंदर को जरूर ग्रूम करना चाहिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अश्विन के मुकाबले में कोई नहीं है। अश्विन एक ही है, वो इंडिया के सिर्फ दूसरे स्पिनर है, बॉलर है, जो कभी 500 विकेट तक पहुंच पाए। और ये मैं कह चुका हूं बहुत शोज पे, अश्विन के बाद किसी भी देश से कोई भी बॉलर कभी 500 विकेट के आसपास नहीं आएगा। सो यस, आई एग्री विथ यू, वी नीड टू गिव चांसेस टू सुंदर, but Sundar also needs to stay fit. Sundar, Hardik Pandya, Deepak Chahar, इन तीनों का प्रॉब्लम क्या है कि ये 4 मैच खेल के 3-4 महीने के लिए गायब हो जाते हैं इंजरी के नाम पे। तो I have a lot of time for Sundar. I've openly backed him. I've called for his selection in the One Day World Cup and the T20 World Cup 6 months before the squads were announced. But unfortunately, Washington Sundar fit नहीं है, और जो घोड़ा अक्सर गिर के घायल हो जाता है, उस पे टीम ज्यादा समय तक नहीं चांस दे सकती है। पर उससे बड़ी बात है कि उनके पास अश्विन जैसा स्किल नहीं है। ही इज अ वेरी वेरी हैंडी प्लेयर, ही इज अ मच बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर। आई वुड लव टू सी हिम इस पूरे सीरीज में। मैंने कहा था कि भाई अगर आपको चांस देना है सुंदर को, तो प्ले हिम एज अ बैट्समैन। आई होप ही प्लेज एज अ बैट्समैन इन प्लेस ऑफ पाटीदार इन धर्मशाला। सुबोध भाई नवंबर 19 नहीं भूल पा रहे हैं यार। भूल तो मैं भी नहीं पा रहा हूं, जो कांड उस दिन विराट कोहली और केएल राहुल ने किया।
About Rohit, Virat, Bumrah not playing first class, I feel they are established players and shown capability and dedication to play test in their 30s. Second, only doubtful players on skill, dedication. बात सही है, बिल्कुल सही है। जे प्लीज वो टाइम लिमिट मत लगाइए, बहुत सवाल होते हैं, लेकिन सुबोध बाकी लोग दो सवाल पूछ रहे हैं, तुमने ऑलरेडी 35 पूछे हैं। बाकी लोग को चांस दो ना। इस ये चैट हम दोनों के बीच नहीं है ना। पीबीकेएस वालों ले जाओ केएलआर को। You think he'll go back to Punjab from Lucknow? I don't think so. What's your view on India not playing Pakistan? Honestly, that's soft diplomacy. ओहो बहुत बहुत ये बहुत बहुत शोज कर चुका हूँ अलग प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज चैनल्स पर मुझे एक समय पर बुलाया जाता था फॉर माय रादर फोर्थराइट व्यूज आजकल वो कॉल नहीं आते हालात बदल चुके हैं um, you have to play my earliest memories हालांकि मैंने मैच देखा नहीं मैं केवल 5-6 साल का था but I grew up hearing stories of India Pakistan rivalry especially Javed Miandar और जब से मैंने होस्ट संभाला एज अ क्रिकेट फैन 28 साल से इंडिया पाकिस्तान मैचेस हैव बीन माय फेवरेट I've done such mad things I've described them in my vlogs as well so for me India Pakistan should be playing मैं उनमें से नहीं हूं जो कहते हैं कि भाई वो गद्दार है वो टेररिस्ट है फिलाना ढिमकाना है भाई गंदगी दोनों तरफ है and yes of course the politics do matter and the military tension does matter. But I believe sport is a unifying factor. मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता हूं कि just because situation ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, the two teams shouldn't be playing cricket or any sport. I would love to see them. But unfortunately, जो दोनों देश के सरकार हैं, वो कभी ये चीज होने नहीं देंगे एक bilateral तौर पर. Akashdeep will be good bowler on border Gavaskar. Yes, 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 बिल्कुल. ये सवाल आया था कुछ दिन पहले मैंने कहा जरूर रविंद्र जडेजा पे फिटनेस पे सवाल उठाने चाहिए उठाओ यार टैग करो सुबोध ट्विटर पे हो टैग करो जडेजा को टैग करो जाओ जाओ करो करो why are tour matches not played in these 10-day long breaks I think sports fan that era has gone and I understand why for the longest time probably last 20 odd years tour matches stopped being relevant because all the boards, all the state associations, they started giving such faltu C grade teams. So I'm actually a much bigger fan of these intra squad matches where a team is playing its own bowlers, the same level of bowlers which it will play when the actual test series starts. Board presidents and all पिछले 20 साल से मैंने कोई ढंग का बोर्ड प्रेसिडेंट्स बल्कि 2006 के बाद से आई कवर्ड अबाउट 4-5 बोर्ड प्रेसिडेंट्स मैचेस 2006 के बाद जो मुनाफ पटेल सी until 2006 at least in India the board president's team was still full of big names Gambhir I watched Gambhir एक second I'm gonna in fact hold that thought I'm gonna tell you exactly don't go anywhere लिख रहा हूं कुछ I'm going to read out a board presence 11 to you. Here we go. ये रिपोर्ट दोस्तों मैंने लिखा था ओहो वो क्या बात है exactly February 25th 2006 इंग्लैंड टीम आई थी 2006 में एक टेस्ट सीरीज के लिए Let me read out to you India's board presence 11 from 2006 Wasim Jafar Gautam Gambhir Dheeraj Jadhav Suresh Raina Venugopal Rao S Badinath दिनेश कार्तिक रमेश पवार वीआरवी सिंह मुनाफ पटेल और शिव सुंदर पॉल उस दिन की बात है पिछले तकरीबन 15-17 साल से ऐसा नहीं देखने को मिला है कि कोई भी टीम इंडियन टीम हो एज अ होस्ट नेशन या ईसीबी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका क्रिकेट श्रीलंकन cricket I've also covered board presidents matches there too they stopped turning out these players आप इस 2006 का इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से 8 प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट खेले और 2 और वनडे खेले आज के टाइम पे you're not even given the best board presence 11 so it actually turns out to be counterproductive and I get why would you want to welcome a team and put them into form playing your top domestic team which has 6 7 8 test players उनके फायदे में है तो across the board across countries these tour matches have become utterly irrelevant आजकल तो मैच 2 दिन के होते हैं कई टीम्स टॉस जीत के बोलते हैं भाई हम बैटिंग करेंगे कई बोलते हैं टॉस मत कराना हमारी बैटिंग करा दो and then they field 20 so it's unfortunately the tour match has just
become a joke sports fan. So I totally get why it's not important, and I think it's fine. There's no point doing it. Jamie sir, your thoughts on Ravindra Jadeja's father's statement? अब मैंने उनका सवाल नहीं पढ़ा है. हुआ क्या ऐसा मुझे बताना. यस, सुबोध हो गया. आज के बाद आज के दिन को सुबोध को break. No more question from Subodh. Can India make it to WTC final? Why not? At least Patar is playing test cricket. Manoj Tiwari, Faiz Fazal, Sheldon Jackson, recent examples. बिल्कुल बिल्कुल बहुत players हैं जो Amol Mazumdar, the finest Indian batsman. Amol Mazumdar and KP Bhaskar, the two finest Indian batsmen never to play for India. तो पाटीदार तो बहुत पीछे हैं यार उनसे. Politics is everywhere in cricket, especially in subcontinent. But why is it that only India is thriving by focusing on first class high matches in places like Ranchi or Seguin? Politics is everywhere. India is thriving. How is India thriving? Can you please give me an example, Akash, of how India is thriving? 11 साल हो गए, एक भी ट्रॉफी नहीं आई. How are they thriving? If both Pant and Virat return, do you think Jurel can bat instead of Sarfaraz? Yes, this question has been asked numerous times. First, since Sarfaraz's stellar debut, and since yesterday when Jurel was man of the match. Very, very obvious. Let's go in order of how I expect it to pan out. KL Rahul possibly comes back for the 5th test match, and Patidar goes out. Next, in the month of September, when Bangladesh come for 2 test matches, Virat Kohli and KL Rahul are around, and so Sarfaraz drops out. Now let's say September, when New Zealand come, Rishabh Pant comes back. Out goes Dhruv Jurel, right? सिंपल सी बात है, जब सीनियर प्लेयर्स आते हैं वापस तो जूनियर्स को, और देखिए जूनियर्स और व्हाट आर देयर ओनली प्लेस होल्डर्स, यू नो व्हाट आई मीन बाय प्लेस होल्डर्स. ये जो होते हैं, ये आपको यहाँ पे ये जो है, ये कोस्टर ये मैंने यहां रखा, ये कॉफी का मग मैंने यहां रखा. ये चीज सिर्फ काम का आता है जब तक इस पे एक मग हो. मैंने कॉफी पिया, मैंने चाय पी ली, मग गया किचन में, उसको धोया, धोने के बाद ड्राई करके मैंने उसको वापस डाल दिया अलमारी में. ये किस काम का है? ये कुछ काम का नहीं है. This is what Sarfaraz is. This is what Jurel is. This is what Patidar is. These are what these youngsters are. They are B players. They're B team players. जब A team players वाले आते हैं, यानी कि ये कॉफी का मग, ये प्लेयर्स को साइड होना पड़ेगा, और ये सालों से चलते आ रहा है. ये नई बात नहीं है. KL Rahul comes back, one batsman goes out. Jasprit Bumrah comes back, one bowler goes out. Virat Kohli comes back, one bowler goes out. Pant comes back, Jurel goes out. I believe, और ये मैंने कल 3 बार कहा था लाइव स्ट्रीम्स पे, Dhruv Jurel has done enough to be the second keeper. और अगर पंत कीपिंग भी करते हैं, Jurel can hold his own in the 11 as a pure batsman. Likewise, if Rishabh Pant comes back as a batsman first, Jurel can keep and Pant can play as a batsman. लेकिन ऐसे सिनारियो में, जिस सिनारियो में पंत और जुरेल एक ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बाहर कौन है? विराट कोहली, केएल राहुल. तो hats off to Jurel, hats off to Sarfaraz Khan, but when the big names come back, इनको साइड होना पड़ेगा. कड़वी सच. Why is there no left arm bowler in Indian Test squad? There's just not enough left arm bowlers consistently hitting the right speeds and taking wickets for India. सुबोध हो गया सवाल बहुत. आकाश, we have not won trophy but infrastructure in smaller cities or developed. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. अच्छा, so you're talking about the stadium growth. हाँ बिल्कुल, no doubt, a lot of infrastructure has gotten better. Julius from Agra to play India, बिल्कुल सही है. We're the richest board giving pension. Oh बिल्कुल बिल्कुल, we are the richest board. We have the richest league. We have the best T20 league in the world. We have the best batsmen. इस देश के कोने कोने में, कह चुका हूं बहुत बार, गली गली में जाओ आपको टैलेंट दिखेगा. But unfortunately, इस सारे टैलेंट को लेकर 50 वनडे हंड्रेड्स के साथ, 510 टेस्ट विकेट के साथ, 3 डबल सेंचुरी के साथ, पर्सनल ग्लोरी के अलावा, बायलैटरल के अलावा क्या उखाड़ा हमने? माफी चाहूंगा अगर आपको मेरी बात कड़वी लगे, गलत लगे. I love the Indian team. I'm an Indian, born here. I grew up crying in tears and crying in joy when India won matches and lost many finals. But 11 साल हो गए. आप कह रहे हो richest board, biggest power, हम विश्व क्रिकेट को चलाते हैं, बाकी सारे बोर्ड्स हमारे मर्जी के मुताबिक चलते हैं. यार ऑस्ट्रेलिया के पास पिछले 3 साल में ना
T20 वर्ल्ड कप है 21 में। पिछले साल WTC ट्रॉफी जीते हैं। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीते। I would much value these three trophies. That is what sport is about. रखो अपने पैसे, रखो अपना IPL, रखो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या काम जब आप कंसिस्टेंटली एक विश्व का टॉप टीम नहीं बना सकते हो। माफी चाहूंगा, बट आई एम वेरी इमोशनल। मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूं जहां पे इंडियन क्रिकेट की सफलता की बात होती है। आई लव दिस गाइस, आई लव दिस टीम, लेकिन 11 साल से ऊपर आपका ये पैसा, आपका ये BCCI, आपका ये सिस्टम। IPL कब आया? 2008। इंडिया ने पहली और आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप कब जीता? 2007। क्या मिला आपको IPL से इन अ बिगर पिक्चर? सोचिए इस बात पर। हाउ डू यू सी Harma Bihari situation? Oh, it's so sad. Why doesn't BCCI intervene in such matters? It should, and I fully expect it to do something very soon. मुनाफ पटेल rattled England. बिल्कुल भाई, उस मैच में मैंने पूरा पीस लिखा था। मुनाफ पटेल first innings 238. Munaf Patel got 5 wickets and second he got 10 wickets. Let me post that link here for you guys. Actually एक काम करते हैं। ये मेरा one of my earliest, in fact this was my first, वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, this is my first live match report। पहली बार मैं 25 साल का था, 24 की उम्र में मैं US छोड़ के वापस इंडिया आया था। I joined Cricinfo. My first reporting gig was this board president's match, and then it was straight to the 2006 Champions Trophy. Still early days. Yes, Subodh. You've been critical of Shubman Gill, but team management has shown faith to him. Can you analyze his journey so far? I have done this, Akash, many times. A lot of people like you have asked the same question. I have highlighted his journey here many times. In fact, I've done 2 full-fledged interviews with Shubman Gill. They're for GQ magazine. Let me just paste the link. In fact, because I don't want to repeat myself here. But what I will do is, my friend, I'm going to post a link here to you, ठीक है? और आप वहां से जाके वो पूरा जो मैंने इनका जो बैकग्राउंड पे मैंने एक स्टोरी किया था शुभमन गिल पर, आप वो इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये लीजिए, this was my first interview. This is just for you, my friend, who asked the question. Akash, here you go. Do read this. You'll understand a lot about my views on Shubman Gill. And there's another one, but that's for another day. Shubman Gill, in short, since you asked a very good question, he ticked every conceivable box to get here to where he is. He's been inconsistent, yes, but I'm very glad, because I said if he didn't score runs in the first 2 test matches, he should be sent back to domestic for a break. But then again, Virat Kohli and KL Rahul didn't play, so Shubman Gill got a third chance. And in that third chance, he got 100. And then in the fourth chance, he got a 90. And he got a 50 odd not out. So I'm glad that he's come back. I believe he has 10 years minimum left to play for India. I believe he will bat in the middle order more often, as in number 4 or 5 in the future. And I believe at some point he will captain India, but he needs to really up his game right now, because that high level one days very good. T20s, I don't think he's a natural fit to T20s, but I believe in one days and tests he'll play for a long time. But he needs to fix some certain technical issues. Ashwin and Bairstow both playing 100 tests. Yes, I remember Bairstow having baseball bat like hold on bat. Has that changed? It has changed. You're right. It's changed. Also, Ashwin should have some flippers and more carom balls. It is. I'm very glad that he's not trying too much. He tries too much. The bowling form often dips. विनायक पाटीदार को एक और मौका मिलना चाहिए, ये मैंने कल कहा था 3 लाइव शोज पे। मेरा जवाब इस पे ये है, यदि सितंबर या अगस्त के महीने में जब इंडिया बैक टू बैक 4 टेस्ट मैच खेलेगी, 2 बांग्लादेश, 2 श्रीलंका, यदि पाटीदार उनके प्लान्स में होंगे तब तो इनको शायद एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर तब तक ये सारे फ्रिंज प्लेयर्स को ये सॉरी एक तरफ साइड करेंगे तो क्या फायदा। फिलहाल टेम्परमेंट और फॉर्म और टेक्निक के बेसिस पर बेचारे पाटीदार बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 डक हासिल कर चुके हैं
पिछले 3 पारी में, किस बेसिस पर आप उन्हें आखिरी मैच खिलाएंगे? आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है, जिन्होंने 2 टेस्ट मैच में एक 86 मारा है और एक 96 मारा है। बॉलिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल आई डोंट नो वेदर दे विल प्ले हिम। आपके पास देवदत्त पाडिक्कल है, उनको आप चांस दे सकते हो। अगर टीम मैनेजमेंट ने पाटीदार के खराब फॉर्म के बावजूद कहा चलो बंदे का हौसला बढ़ाने के लिए हम उनको एक और मौका देंगे, लेकिन उसके बाद कभी नहीं खिलाएंगे उनको, क्या पॉइंट? May as well play someone else who's part of your future plans. Thanks for sharing the link. Have a nice day. Thank you, Akash. You too. Take care. Just read your first report, sir. Thank you, Subodh. Shubman Gill defense against left arm spin is terrible. Yes, like I said, fantastic player. All the shots, tremendous on his day, tremendous in Ahmedabad, but he has a lot of work to do. Shri dosto, I need to get an audition ready to send to somebody for a fairly big वेब सीरीज रोल आई बीन ऑफर्ड. होपफुली आई गेट इट. थोड़ा मुझे 3-4 घंटे उसमें काम करना पड़ेगा और फिर शाम के वक्त तो एक और शो होता है 6:45 ऑन क्रिकेट नेक्स्ट. थैंक्स फॉर वाचिंग. इफ यू नॉट सब्सक्राइब डू दैट. इनफैक्ट आई थिंक आई हैव सेट द फिटर टू ओनली सब्सक्राइबर. पर जो भी है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें. Ashutosh, thank you. Got another 2-3 hours of hard work and then I'll be back to cricket by 6:45. You all have a great Tuesday. Take care. Jai Hind.